that women have a revolution. Fine. So yesterday we have seen that how Jacobean rule it finally came towards end. एंड में आ गया वो फिर जो ये थे लीडर थे रॉबर्टसबेरी पाई ही had his own terror from 93 to 94. He started imposing strict rules and punishments. It can be members of his own political parties, members of other political parties. Then what he did, he increased the prices of normal meat and bread, which was like the basic food for people. And then he forced everyone to eat equality bread and not the expensive one. Then he made certain rules that people should not be addressed with sir and madam, but instead they should be called as citizen. And then people were finally, they wanted freedom from Robespierre because they didn't like him. And finally, he was convicted by court in July 1794 under guillotine. So this is called as reign of terror. ये पूरा हम लोग ने देखा. फिर हम लोग ने directory rule France देखा. That middle class, they now when Jacobean power was into the picture, people of middle class were famous, but now Jacobean power they fell down. And again अभी किसका आया, wealthier middle class, उन्होंने उसका advantage लिया. And they again imposed a new rule. वो new rule क्या था, that only propertied section of society would be allowed. मतलब क्या वापस वैसा ही पहले जैसा रूल के जिसके पास प्रॉपर्टी होगा सिर्फ वही वोट कर सकता है, उन्हीं के पास पावर रहेगी. एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो थे वेल्दियर मिडिल क्लास, उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसका नाम था डायरेक्टरी, विच इंक्लूड 5 members. बट द डायरेक्टरी ऑल्सो डिडंट was not that much famous because they had clashes. They keep clashing off with legislative council, and again they came, the power of directory, it came down. And जैसे मैंने बोला कि ये एक वैक्यूम जैसा है, अगर कोई पावर नीचे आ रहा है तो कोई दूसरा बैठा ही होता है वो पावर लेने को. So as soon as directory came down, who took the power? Who took the power as soon as directory came down? Fine. I'll let sir know that both the kids are not paying attention, so you do the needful. पार्थ, आपको भी नहीं पता डायरेक्टरी का पावर कम हुआ तो किसने नया पावर? I have even highlighted. Napoleon Bonaparte, ठीक है? He came into power, right? पार्थ आप बराबर बोल. Now we will see that women have a revolution. अभी तक हम लोग ने क्या देखा, that women they did not have any political rights. They were not allowed to vote. And when the Frenchmen they were doing the ये war वाला part, they were in the forefront. Women were the one who were responsible for all the responsibilities. So now we will see that women have a revolution. उनको revolution मिला. Were they able to vote, and what all the problems like they were suffering, क्या उनको उनसे freedom मिला, वो हम लोग देखेंगे. From the very beginning, women were active participants in the event, which brought about so many important changes in the French society that we have seen from the very beginning. हम लोग ने देखा Jacobean club में भी women they were a participant, so they have participated in all the event, which brought many changes. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most women of the third estate had to work for a living. As I said, they were working for a living. Why? Because the men they were busy for fighting against the other countries. तो ये जो women थे उनको ही उसका ध्यान रखना पड़ता था. They worked as a seamstresses or laundress, sold flowers, fruits and vegetables and markets at the markets, or were employed as
domestic servants in the houses of prosperous people. तो क्या काम करते थे women? They either used to work as a laundress, or they used to sell fruits and vegetables. They used to sell flowers, or they used to work as a servant. तो servant किसके अंडर काम करेंगे? जो prosperous people थे, जो nobles थे या जो clergies थे, उनके अंडर they used to work as servant. Most women did not have access to education or job training, that they did not have facility for education or for job training. Only daughters of noble or wealthier members of the third estate would study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. तो क्या होता था कि they didn't have access to education, उनको education facility नहीं थी. तो किनको education facilities थी? Only first class और second class के जो थे, which is noble and clergies, सिर्फ उनके daughters को या उनकी wives या उनके घर पे जो सारे फीमेल्स थे, सिर्फ उनको ये सारी चीजों का एक्सेस था. After which what used to happen normally, the family they used to arrange a marriage for them, और फिर वो लड़की वहां से चली जाती थी. Working women had also to care for their families, that is cook, fetch water, queue up for bread and look after the children. The wages were lower than those of men. एक तो ये लोग ऑलरेडी दूसरे जगह जाके काम करते थे, but at the same time उनको घर का भी काम होता था. तो घर का कैसे काम होता था? They used to cook food, they used to go to fetch water. फिर bread के लिए, since bread was very costly, तो वहाँ पे ऐसे line लगती थी bread के लिए, because hardly people used to have it. तो जब भी bread आता था तो वहाँ पे line लगती थी, तो they used to stand in for the queue for bread and also look after the children. Okay, their wages is the salary. तो उनका salary भी बहुत lower था as compared to men. So suppose if men are earning 100 rupees per month, so they hardly used to earn like 30 to 40 rupees. So such were the prices of women as compared to men. समझा first paragraph? Yes, ma'am. समझा first paragraph? Ma'am. Yeah. Ma'am. मैम मेरा बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था. क्या आप यहाँ का ये फर्स्ट पैराग्राफ का बीच में से बता सकते हो? Yeah. Daksh, have you understood what I have said? मैम ये most Yeah, I'll explain. See, first paragraph में basically क्या बताया, that women they had to take like women they have actively taken part in all of the events, right from Jacobean club से लेके every event they have taken part. So now they thought that उनका participation उनके participation के वजह से government को उनके ऊपर जो सारे rules बना है, they should be changed. So we have seen what roles women they used to do. They used to sell flowers, they used to sell vegetables, fruits, and sometimes they used to work as servants in someone house, like someone house नहीं, prosperous people के house में, like nobles हो गए, clergy हो गए, उनके घर पे वो as a servant काम करती थी. And at the same time they used to look after their family. They used to cook food, fetch water, queue up for bread, etc. एंड यहाँ पे हम लोग ने देखा जो नॉर्मल वुमेन थी उनको एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, एंड ऑल्सो दे डिडंट हैव एक्सेस टू जॉब ट्रेनिंग. तो किसको एक्सेस था? ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और क्लर्जीज. जो अपर क्लास, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के थे, जो नोबल्स थे, जो क्लर्जीज थे, सिर्फ उनकी डॉटर्स को या उनकी वाइफ्स को ही एक्सेस था. किस चीज का एक्सेस था? For education and for job purpose. Itna I've taught in the first paragraph. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Second, in order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper. About 60 women club came into different French cities. The societies of revolutionary and republican women was the most famous of them. So what they decided कि अभी हम लोग को हमारे rights के लिए we should create political
groups. So there were 60 women who came together in French society. Overall, there were 60 women who decided that let us make our group. And one of them was Society of Revolutionary. ये उनका एक खुद का club था जहाँ पे they used to discuss everything. And another was Republican Women. So these two were the groups of women like उनका club था जहाँ पे they used to discuss for their rights and उनके पॉलिटिकल राइट्स और वो सब के लिए गवर्नमेंट से कैसे हम लोग अपने लिए राइट्स जीत सके उन सब के ऊपर डिस्कशन करने के लिए they created this two groups. One of their main demand was that women enjoy the same political right as men. कि उनका बड़ा एक डिमांड यही था कि जो सारे पावर्स मेन को है वही राइट्स हम वुमेन को भी होने चाहिए. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive power. As we have seen, Constitution of 1791 में women they were not allowed to vote, right? तो एनी वुमेन अगर वो 3 टाइम का वो टैक्स भी दे पाती थी तो भी उनको राइट नहीं था. तो दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड कि हम लोग को पैसिव सिटीजन में डाल दिया गया एंड यू डिडंट गेट राइट टू वोट. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज इनइक्वल, राइट? तो उनका मेन डिमांड ही यही था दैट वी शुड एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन, कि जो सारे राइट्स उनको है वो सब हमको भी मिलने चाहिए. दे डिमांडेड राइट टू वोट, to be elected to the assembly and to hold political office. ठीक है, तो मेन उनका डिमांड क्या था that even we should get right to vote. Yeah, only then they felt would their interests be represented in the new government. And उनको लगा कि जब हमें right to vote मिलेगा तब भी government के position में या anything which is related to government laws, policies वो हम तक पहुंचेगा. समझा? Yes, ma'am. Okay. Next, in the early years, the revolutionary government did introduce laws that help improve the lives of women. Together with the creation of state schooling was made compulsory for all the girls. Their father could no longer force them into marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. Divorce was made legal and could be applied for by both women and men. Women could now train for jobs, could become artists or run small business. So after this, some revolutionary government, government they introduced new laws for women जिनसे उनकी life better हो गई. तो क्या better हुआ? They introduced school introduce कर दिया so that they can get access to education. फिर what all they did, they made it compulsory for all the girls कि कभी कभी क्या होता है parents they won't allow you to go. So that is why they made it compulsory for all the girls to join school. Again, they made sure that marriage was with their will. Okay, कि उनकी मर्जी के हिसाब से उनका marriage हो रहा है and no one is forcing them to get married to anyone. Again, it was under a marriage was made into a contract, entered into freely and registered under civil law. कि जो marriage था उसको वापस register करते थे, ऐसे ही नहीं कि किसी के साथ भी शादी करा दिया, but that was properly registered. And even divorce was made legal. पहले क्या होता था, if a woman she wants to leave that particular man, it wasn't allowed for her, but now it was made legal that if she wants to give a particular man divorce, so she can give. So the divorce was made legal. So all of these changes, she was now trained for job and other small business के उसको अभी training दी जा रही थी that she can become a, so she can run a small business or she can take part in all the activities. Like अगर उनको artist बनना है तो वो कर सकते हैं and everything. So पता चला government ने क्या क्या changes लाए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next, women's struggle for equal political rights, however, continued. During the reign of terror, the new government issued laws accordingly closure of women's clubs and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them were executed. तभी क्या हुआ? Again the struggle for
पार्थ आपका माइक अनम्यूट करो। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हावेवर कंटिन्यूड। ये तो ठीक है, ये सारा तो इट इज राइट कि ठीक है एजुकेशन एक्सेस कर दिया, डिवोर्स को लीगल कर दिया, बट व्हाट अबाउट टू वोट? दैट वाज अ मेन डिमांड विच फॉर विच वुमेन वर फाइटिंग। तो वो अब तक नहीं किया था, तो वुमेन वर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, कि जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स था वो अब तक उनको मिला नहीं था। Yeah, during the reign of terror, the government issued laws ordering closure of women club. Okay, तो reign of terror जो हमने ऊपर देखा उसमें उन्होंने क्या बोला, that all these political activities and all the clubs which are being created by women, they should be banned and they should be closed. And many prominent women were arrested, के जो leaders होते हैं ना, जो उनको help करते हैं, तो जो सारे prominent women थे, even they were arrested and a number of them were executed. It means that they were killed. Next, women's movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 years. Okay, that women, they were fighting for 200 years to get that right for voting. See the struggle, 200 साल तक वो लोग अपने rights के लिए झगड़ रहे थे. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and earlier 20th century. So till 19th उनको अपना demand fulfill उनका नहीं हुआ था. उनका जो demand था right to vote, that wasn't fulfilled till 19th century and almost till 20th. The example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. तो उनको finally कभी मिला right that they can vote in 1946. देखो हम लोग ने यहाँ पे देखा, they started, okay, नहीं यहाँ पे date, yeah, women were disappointed like 1791 to 1791 से 1946, like it's almost 200 years that they were fighting for it. तो यहाँ पे you'll understand. तो ये पूरे paragraph में, like पूरे chapter में हमने वही देखा that how women struggled, how they created their own group, they fought for their own demand, but still it wasn't fulfilled. Then the government, they made certain changes, like they gave permission to access school, they made marriage legal, they made divorce legal, then equal political rights के लिए women were still struggling. It wasn't fulfilled till 19th and 20th century, and finally in 1946 women won the right to vote. Is it understood? Yes, ma'am. Okay. Miss, what is the page number? 4 का है, 4 starts with 18. Ma'am, now we are at 5 now. We are going Yeah. to 5. The abolition of slavery, right? अभी हम लोग वो देखेंगे. One of the most revolutionary social reforms of the Jacobean reign was the abolition of slavery in the French colonies. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe, and San Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या था, द कॉलोनीज इन कैरेबियन, जो कैरेबियन की कॉलोनीज थी, दे वो सप्लायर, क्या क्या चीज सप्लाई करती थी, दे यूज्ड टू सप्लाई दिस बेसिक कॉमोडिटीज लाइक टबैको हो गया, इंडिगो हो गया, शुगर हो गया, कॉफी हो गया, ये कैरेबियन ये लोगों को सप्लाई करता था. कॉलोनीज इन कैरेबियन, तो कैरेबियन में कौन कौन सी कॉलोनी, ये 3 प्लेसेस, मार्टिन क्यू, ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो, ये 3 जगह पे ये लोग ये सप्लाई करते थे. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation. So this was meant by a triangular slave trade between Europe, Africa,
and Americans. तो अभी ये लोग क्या बता रहे हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ. The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes to African coast where they bought slaves from local chieftains. Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. They were then sold to plantation owners. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee, and indigo. Both cities Port cities like Bordeaux and Nantes own the economic prosperity to the flourishing slave trade. अभी पूरे पैराग्राफ को मैं इजीली अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ that what are they trying to say. यहाँ पे एक तो ड्राइंग करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. एनीवेज ठीक है. देखो यहाँ पे व्हाट आर दे ट्राइंग टू सी. कैरेबियन करके प्लेस है हम लोग ने देखा. वो क्या करता था? टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी करता था. व्हाट इज दिस ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. तो यहाँ पे वी हैव ये वाला समझो ये है यूरोप. ठीक है. और एल्स वेट व्हाट आई डू इज yeah. ठीक है. चलो मैं ड्रॉइंग ही करती हूँ. ठीक है. अभी यहाँ पे कैसे होता था? सी, दिस इज अमेरिका ओवर हियर. ठीक है. ये अमेरिका है. ये यहाँ पे यू हैव यूरोप, यूरोपियन कंट्रीज जिसमें अपना फ्रांस भी आ गया. तो ये यूरोपियन कंट्रीज और ये फ्रांस हो गया. एंड यहाँ पे यू हैव अफ्रीका. ठीक है. तो ये अफ्रीका का पोर्शन हो गया. नाउ व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? देखो, they made a triangular slave trade between Europe and Africa. The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes. अभी ये Bordeaux और Nantes कहाँ पे आ गया? These are ports. and ये आता था हमारे यूरोप में यहाँ पे. So we have Bordeaux over here and Frontex क्या था? Bordeaux and Nantes. तो ये दो फोर्ट यहाँ पे आ गए which is in Europe and France. तो अभी यूरोप क्या क्या था? अभी इक्वेटोरियल पे अगर होता है ना तो वहां पे प्रोडक्शन आपका अच्छा होता है. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, अफ्रीका में दे हैड लॉट ऑफ पीपल हु कैन वर्क एज स्लेव्स. तो ये लोग क्या करते थे? दे यूज्ड टू गो टू अफ्रीका टू ब्रिंग स्लेव्स. आदमी लोगों को लेके आते थे कि वो उनके लिए काम करेंगे. तो यहाँ पे वही लिखा है देखो. But the reluctance of Europe to go and work in distant and unfamiliar. अभी उनका क्या था? यूरोप का क्या रहता है पता है? कि जहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन होगी ना वहां पे प्रोडक्शन अच्छा होता है. सो वन सच प्लेस इज अमेरिका. तो वो क्या करता था? उन्होंने अमेरिका में अपनी लैंड्स बनाई. फिर अलग अलग प्लेसेस में अमेरिका में बहुत सारी जगह लैंड खरीद लिया. अभी लैंड तो खरीद लिया बट काम करने के लिए यू नीड वर्कर्स, यू नीड स्लेव्स. तो ये लोग क्या करते थे? अभी यूरोप है, अमेरिका इधर है. तो ये लोग क्या करते थे? अफ्रीका से दे यूज टू पिक पीपल टू वर्क एज स्लेव्स फॉर देम. तो यहाँ पे वही लिखा है देखो. द स्लेव ट्रेड बिगन. हाँ, फ्रेंच मर्चेंट सेल फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डेक्स और नेंटेक्स. ए है अपना बॉर्डेक्स, ये बी, और ये है अपना नेंटेक्स. तो बॉर्डेक्स और नेंटेक्स से वो लोग जाते थे, अफ्रीका से लेके आते थे लोगों को. सी यहाँ पे लिखा है. where they brought slaves from local chieftains. Branded and shackled, the slaves were packed tight into ships for 3 months and then they were sent to Atlantic to the Caribbean. और फिर वो लोग क्या करते थे? उनको यहाँ पे मतलब ये यूरोप है ना, फ्रांस, वो यहाँ पे उनको भेज देता था. यहाँ से इंसानों में लाइक दे ब्रॉट पीपल ओवर, पीपल फ्रॉम हियर, अफ्रीका से आदमी लोगों को लाया यहाँ पे यूरोप फ्रांस में. एंड देन दे यूज टू सेंड इट टू अमेरिका. ठीक है. सो दैट इज व्हाई दे हैव कॉल्ड अ ट्रायंगुलर स्लेव. तो तीनों कंट्रीज में क्या हो गया? तीनों कंट्रीज एक दूसरे को ट्रेड के पर्पस के लिए जानने लगी. वैसा समझा यहाँ तक? Yes, ma'am. And Okay.
So what happened? See, African coast they brought slave from local chieftains, branded and shackled. फिर वो Atlantic में भेज देते थे. They were sold to plantation owners कि जिनका खुद का land हो, जिनको they one who have land और जिनको काम करने के लिए लोग चाहिए उनको फिर वो लोग sell कर देते थे. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo. तो इनका demand ज्यादा था because ये ऊपर हम लोग ने देखा ये सब जगह सप्लाई किया जाता था. And cities like Bordeaux and Nantes own their economic prosperity. अभी हम लोग ने मैंने यहाँ पे बताया था Bordeaux और Nantes जो फ्रांस यूरोप मैंने बताया उनका prosperity क्यों था? Because मैंने बताया ना आप लोग को वो लोग क्या करते थे, वो लोग अफ्रीका नीचे से मैंने बताया देखो यहाँ से नीचे से अफ्रीका से लेके आते थे एंड यहाँ पे खुद के पास लाते थे फ्रांस ऑफ यूरोप में और फिर यहाँ पे वो लोग सेल करते थे, लोगों को बेचते थे एज अ स्लेव. So that is why since they used to do this slave trade, they maintained their economic prosperity. क्योंकि उनके पास से लोग आते थे ना इस slaves को खरीदने के लिए तो उनका इकोनॉमिक अच्छा था. बोलो मैम मतलब ये ट्रेड भी स्लेव्स ही करते थे? नहीं, ट्रेड स्लेव्स नहीं करते थे. ये जो लोग है ना जो उनको लेके जाते थे वो लोग. अभी समझो ये लोग जो बिजनेसमैन है जो लेके आते थे अफ्रीका से, वैसा अभी बिजनेसमैन है तो वो फ्रांस से अफ्रीका गए, उधर से उन्होंने उठाया, किनको उठाया, स्लेव्स को उठाया, फिर खुद के कंट्री में लाए फ्रांस यूरोप में, वहां पे दूसरे बिजनेसमैन को सेल कर दिया, वैसा अमेरिका में सेल कर दिया, फिर आधे लोगों को अमेरिका में बेच दिया. तो वैसे द बिजनेसमैन यूज टू हैव प्रॉफिट्स, जिनके पास लैंड होता था या जिनको काम करने के लिए स्लेव्स चाहिए थे उनका प्रॉफिट था. स्लेव्स तो बेचारे उनको काम करना पड़ता था तो वो लोग जिधर लेके जाते थे उधर जाते थे, ऐसा. समझा? Yes, ma'am. Okay. Throughout the 18th century, there were little criticism of slavery in France. तो slaves बेचारे जो थे वो परेशान हो गए थे कि यहाँ से सब जगह हमको लेके जा रहे थे. And even they didn't like to work for some other people, right? उनका मेहनत और उनको कुछ मिलता ही नहीं है. Everything they have to submit it to the owner of the land. So that is why they were little upset. The National Assembly held long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colony. But it did not pass any law, fearing opposition from businessmen whose income depend on the slave trade. कि जो नेशनल असेंबली था, जो हम लोग ने देखा, जो लेजिस्लेटिव में आता था, जो काम करता था, जो रूल पास करता था, उन्होंने बड़े बड़े डिस्कशन किए कि ये स्लेव्स का जो ये बिजनेस है वो बंद कर देना चाहिए क्या. बट कभी कोई लॉ पास नहीं हुआ. क्यों पास नहीं हुआ? बिकॉज उनको डर लगता था कि बिजनेसमैन हम लोग को अपोज ना करे. वो लोग क्यों अपोज करेंगे? बिकॉज अगर स्लेव ट्रेडिंग बंद कर दिया तो उनके अंडर कोई काम नहीं करेगा, एंड अगर उनके अंडर कोई काम नहीं किया तो उनके पास इनकम कहाँ से आएगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट इज व्हाई दे नेवर गॉट द परमिशन फ्रॉम बिजनेसमैन. मतलब उनको लगता था कि बिजनेसमैन अपोज ही करेंगे ये सब चीजों को. समझा यहाँ तक? Yes, ma'am. Yeah, it was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession. This, however, turned out to be a very short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest, and slavery was finally abolished in French colonies in 1848. तो अभी क्या हुआ? कन्वेंशन हम लोग ने देखा. कन्वेंशन क्या था? किसने लाया था ये? किसने कन्वेंशन लाया था? मैम Nep- जैकोबियन. या Miss Napoleon. नेपोलियन ने नहीं बचा. नेपोलियन तो उसके बाद में आया ना. जो जैकोबियन रूल था
वो लोग लेके आए थे ये पावर, बराबर, कन्वेंशन का पावर वो लोग लेके आए थे, बट फिर क्या हुआ, वो भी ज्यादा टाइम तक टिका नहीं। जो जैकोबियंस थे उन्होंने नया पावर लाया, असेंबली लाया कन्वेंशन का। तो कन्वेंशन में उन्होंने बोला कि ठीक है सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया जाए। तो कन्वेंशन ने ये एक अच्छा काम किया कि जो ये स्लेव ट्रेडिंग हो रहा था उसको उन्होंने फ्री कर दिया। बट हम लोग ने देखा जैकोबियन भी इतना टाइम चला नहीं, बरोबर। जैकोबियन जैसे ही पावर में लो हो गया, उसका जो लीडर था रॉबिस, वो जैसे ही लो हो गया, तो किसने जगह ले लिया जैकोबियन के बाद, जो बड़े हायर प्रॉस्पेरिस जो क्लर्जी थे वो लोग ने पावर ले लिया। एंड क्लर्जी वो लोग जब डाउन हुए तब नेपोलियन ने पावर लिया, समझा। तो वैसे हो गया। तो कन्वेंशन के टाइम पे उन्होंने, कन्वेंशन ने रूल पास किया कि ठीक है ऑल स्लेव्स को फ्री कर दो, बट ये भी ज्यादा टाइम नहीं चला है। दैट इज व्हाई दे हैव रिटन दैट इट वाज अ शॉर्ट टर्म मेजर। क्यों? बिकॉज हम लोग ने देखा कि जैकोबियन का पावर सिर्फ 10 से 12 इयर्स तक ही चला। उसके बाद वो जैसे रॉबिस्पेयर रूल करने लगे, उन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अपनाई, तो एवरीवन डिसाइडेड कि रॉबिस्पेयर को हम खत्म कर देंगे। तो जब तक जैकोबियन था तब तक स्लेव्स बेचारे फ्री थे। बट उसके बाद जैकोबियन के बाद हम लोग ने देखा कौन आया, जैकोबियन के बाद हायर क्लास के लोग आए। तो हायर क्लास के लोगों ने वापस ये रूल स्टार्ट कर दिया, बिकॉज उनको तो पैसा चाहिए, और उनको पैसा कैसे मिलेगा, उनके लैंड में जब स्लेव्स काम करेंगे तब उनको पैसा मिलेगा। तो तब वापस स्टार्ट हो गया। एंड वापस नेपोलियन, उनके बाद जब नेपोलियन आया तब उसने भी वापस से री इंट्रोड्यूस किया स्लेवरी को। तो स्लेव्स को बेचारे को खाली 10 इयर्स तक फ्रीडम मिला था। नाउ प्लांटेशन ओनर्स दे अंडरस्टूड द फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest। एंड फिर जब प्लांटेशन ओनर थे उनको पता चला कि ये जो अफ्रीकन निग्रोज है, मतलब ये बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें जो अफ्रीका से लोगों को ला रहे थे उनका भी एक टाइम से ये होता है ना, उनके स्लेव्स है, बराबर। हम लोग ने नीचे देखा, मैंने यहाँ पे बताया था, इट वाज अफ्रीका, यहाँ पे यूरोपियन थे और यहाँ पे अमेरिकन थे। तो जब प्लांटेशन ओनर्स थे उनको पता चला कि ये तो अफ्रीका के स्लेव्स है जिनको बेनिफिट हो रहा है। एंड फिर तभी उन्होंने जरा खुद का दिमाग लगाया। एंड देन फिर फाइनली फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी को कभी अबॉलिश कर दिया 1848 में, समझा। Yes, ma'am. ओके, now we will see the revolution and everyday life। make sure कि आप लोग को सब टर्म और क्या स्टोरी है वो पता है कि पहले कैसे, पहले सबसे पहले लुइस 16 था। लुइस 16 के बाद जैकोबियन क्लब आया जो मिडिल क्लास लोगों का था, थर्ड मतलब जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे उनका था। बट उनका जो लीडर था रॉबिस्पायर, वो सॉरी वो इतना ये नहीं था, उसने हमेशा लोगों को परेशान किया। यहाँ से इफ यू वांट आई कैन गिव यू अ क्विक रिविजन। ये हम लोग ने देखा था, रॉबिस्पेयर था। रेन ऑफ टेरर मतलब वही रॉबिस्पेयर का ही है। तो जो रॉबिस्पेयर था वो अचानक से स्ट्रिक्ट हो गया, उसने नए नए रूल्स बनाए। एंड जैसे उसने रूल्स बनाए लोगों को लगा नहीं अभी रॉबिस्पेयर नहीं चाहिए। एंड फिर रॉबिस्पेयर को गिलोटिन कर दिया जुलाई 1794 में। जैसे ही रॉबिस्पेयर को गिलोटिन कर दिया, एज आई सेड इट इज लाइक अ वैक्यूम, कोई ना कोई वेट कर ही रहा है कि कब कोई नीचे आए और हमारा पावर आ जाए। तो तब नेपोलियन बोनापार्ट का पावर आ गया वैसा, ठीक है। नाउ फिर हम लोग ने देखा वुमेन डू दे हैव रिवॉल्यूशन, हाउ डिड दे फॉट फॉर देयर जस्टिस। अब वी विल स्टार्ट विद सब क्वेश्चन और सब पार्ट 6 which is the revolution and everyday life। what you guys can do, आप लोग ये सेशन अभी लीव कर दो एंड वापस से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। एंड 2 मिनट रुकना क्योंकि अभी ये एंड होगा ना तो उसको सेव करने को टाइम लगता है, तो 2 मिनट